assume you all have heard of Newton's laws of physics, and if you're an avid reader like me, you've probably also heard of the law of attraction. Now, what if I told you a parallel universe exists? Well, maybe not the one Stephen Hawking was trying to explore, but one which awaits exploration nevertheless, one governed by the laws of imagination. But in the metaverse, there are no laws. The only thing which inhibits you, the only thing which can inhibit you, is also your greatest asset. I'm talking about your mind. The internet is very much alive and kicking. Today, I'm here to talk to you about a relatively newer generation of the internet, Web 3.0. So let me take you back where it all started. Web 1. Read-only web pages and static websites. You could only read information which is broadcasted to you. Then came Web 2, with sites like Twitter and Facebook. User-generated content became the new norm. Web 3, the upcoming generation of the internet, powered by technologies such as artificial intelligence, blockchain, and augmented reality and virtual reality. Web 3 is a whole new world. Let's go over some basic keywords which may help you understand Web 3 a little better. It's something everybody knows of, but nobody really knows about: cryptocurrency and NFTs. So, what is cryptocurrencies? Cryptocurrencies are digital or virtual currencies, and they're secured by cryptography. This makes two things virtually impossible: double spending and counterfeiting. Moving on to NFTs, non-fungible tokens. Digital assets, which can be anything from a piece of art, a painting, a piece of calligraphy, maybe even a piece of pottery, or if you want to put it that way, even if you download your brain into an AI chip and convert it into a digital asset, well, that's an NFT right there. The key thing about NFTs is that there's only gonna be one NFT of one kind in the whole world at any given point in time. You can trade it, you can sell it, you can make a lot of money off of it, but there's always just gonna be that one piece from that one creator. Earlier, I mentioned the metaverse. The metaverse is a place where various aspects of your real life, your social media, online gaming, augmented reality, artificial intelligence, machine learning, blockchain, cryptocurrencies, and NFTs all come together to give you the virtual, elite immersive experience. An immersive universe where your real and physical worlds converge. Moving on, what is a coin? A coin is one basic unit of a cryptocurrency. जैसे आपके 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो एक कॉइन होता है. बिटकॉइन, the world's first cryptocurrency and also the world's reserve currency. अक्सर मुल्कों के जो बैंक रिजर्व्स हैं वो डॉलर्स में पड़े हुए होते हैं. उसी तरह क्रिप्टो करेंसीज, जितनी भी मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं या इवन जो छोटी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन सब ने अपने करेंसी के लिए जो रिजर्व्स रखे होते हैं वो बिटकॉइन में रखे होते हैं. स्टेबल कॉइन. स्टेबल कॉइन्स आर कॉइन्स जिनके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स होते हैं किसी भी रियल लाइफ करेंसी के साथ. It's called being pegged to a certain currency. It can be the dollar, it can be the euro, it can be the pound, it can be even the Pakistani rupee for that matter. Marketplaces. NFT marketplaces are digital platforms. You use them to store, display, buy and sell NFTs. Some of the very famous names in these marketplaces are Foundation, OpenSea and Rarible. Crypto wallets. A crypto wallet is just like any other regular wallet, only that it's powered by blockchain and it can store cryptocurrencies and NFTs. Minting. Minting is the process of converting any given piece of digital data into a digital asset or into an NFT. Gas. Gas fee is the fee you basically pay for minting or for any other transaction you make on the blockchain. I'm going to give you a movie reference here. Enough with the information overload. Do you remember Inception? A dream within a dream within a dream? Well, that's precisely how Web3 operates. It's a world within another world. So I suggest all of you go do your research and go exploring. This is probably your only chance, by the way, to get anywhere close to Marco Polo and Ibn Battuta in today's day and age. So, good luck. Hello and welcome to Policy Beats. I am Usama Nizamani and we're doing our first series, Envisioning 2047, जिसमें हम टेक स्टार्टअप इनोवेशन के बारे में बात करेंगे. और आज हमारे
episode में we have Komal Salman, who is a young creative professional, और आज हम Web 3.0 and थोड़ा उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. Komal, welcome to the show. So Thank you, glad to have Sama. you on our first podcast. Thank you so much. So, Komal, let's get started with our conversation. Could you help us understand कि ये Web 3.0 है क्या चीज़? Web 3.0 is basically the third generation of the internet. जैसे Web 1 में आपके पास बिल्कुल static websites थी and only जो आपकी like बड़ी news corporations थी या जैसे आपके बड़े hotels की multinational chains थी, they were broadcasting information on the internet and you could only read it. Okay. When the second generation of the internet came in, social media, Facebook, Twitter, Instagram, there was a switch and you went on to user-generated content. तो जिसका जो दिल कर रहा है वो डाल रहा है, and that's when the term netizens came in. Web 3 जो है, it takes internet to another level. It includes machine learning, it includes artificial intelligence, and जो इसकी main supportive technology है वो blockchain है, and it also includes augmented reality and virtual reality. Right. अच्छा, मुझे ये बताओ कि overall, general attitude towards technology is quite very binary oriented in Pakistan. कि यार एक चीज़ अच्छी है या बुरी है. And then when you contrast it with the Web 3.0, how do you see that overall attitude towards technology? And do you see any nuances, shades of nuances, in terms of our attitudes towards technology itself? क्या लगता है तुम्हें? I think कि generally जो हमारा एक attitude है, not just towards tech, लेकिन कोई भी नई चीज़ आ जाए तो लोग generally घबराते हैं. This is basic consumer psyche. उसके बाद जब आपको पता हो कि आपने किसी चीज़ के साथ अडैप्ट करना है तो जनरली आप 2-3 दफ़ा सोचते हो बिफोर यू टेक द प्लंज इनटू इट. आई थिंक इट्स जस्ट जनरल ह्यूमन साइकी मे बी. हमारे कल्चर में थोड़ी ये चीज़ ज़्यादा है. हमारा एक बेसिक मसला है कि जिस चीज़ की समझ मेजॉरिटी को ना आ रही हो उसको बैन कर दिया जाता है, जैसे Web 3 के साथ हुआ है. Having said that, I think कि like जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती जिसके सिर्फ एडवांटेजेस हों और जिसका कोई डिसएडवांटेज ना हो. तो having said, like with all of that, you need to really be careful and sort of weigh things out. कि if the disadvantages outweigh the pros of something, तो फिर तो आप ठीक है. You're banning it, तो it's for the greater good समझ आती है. But तुम्हें लगता है कि कोई difference है, like in terms of general attitude between generations? I think yes. अच्छा, किस तरह से? Like I think I'm the last generation or sub generation जिसको dial up internet याद है. My younger sister and my cousins, तो it's impossible for them to comprehend कि कंप्यूटर में भी कार्ड लोड करना होता Even like था. relate with the entire और idea of ये क्या तरीका है कि dial-up इंटरनेट internet. चल रहा है तो फोन नहीं चलेगा हाँ, घर का. हाँ. तो आई थिंक जनरली लाइक ऑब्वियसली जब आपने पैदा होते साथ एक चीज़ देखी है तो आपको उसको अडेप्ट करने की ज़रूरत नहीं बनती. इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जो जनरेशन है विच हैव बीन निकनेम्ड द बूमर्स एंड द बेबी बूमर्स, आई थिंक डेफिनेटली ये टेक से ज़रा घबराते हैं. एंड आई डोंट थिंक इनका कसूर है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मेजॉरिटी वाला टाइम जिसमें आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है वो इन्होंने टेक के बगैर गुजारा है. Okay. या टेक इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था. एंड आई थिंक अब टेक प्रोग्रेस इतनी तेज़ी से कर रहा है कि इवन समटाइम्स पीपल लाइक अस वी फाइंड थिंग्स प्रीटी टेक्निकल एंड वी रियली हैव टू गेट इनटू इट. Like मैं generalize नहीं करूँगा. हर कोई तो इस तरह से नहीं होता. Even like among baby boomers, there are people who are willing to adapt. I think there are a lot of people willing to adapt. I think जो पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू है पर मसला कहाँ आ जाता है कि मतलब वो जो बाइनरी में चीज़ों को देखने का जो आई एक थिंक attitude वो start हो मसला जाता है. ये इधर आ जाता है कि इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ सर्टेन जनरेशन टू लुक एट समथिंग विद अ सर्टेन लेंस. Okay. Like me being in my early 20s, I will look at everything in terms of it being a potential opportunity. Okay. I will look at something in terms of being able to innovate, being able to, put in my ideas and make money off them. ठीक है. For somebody who's aged 50 or maybe 55, 60, they will tend to see they will tend to take a more prudent approach
if I have to put it that Mhm. way. They will see कि अच्छा इसके pros क्या हैं, इसके cons क्या हैं. They will have a very balanced approach to it. Right. जो आपका risk taking है वो general human psychology है कि वो age के साथ कम हो जाता है. Web3 itself इतना rapidly evolve कर रहा है Right. कि you need to be on top of everything all the time. Right. And it's very volatile. तो अब ज़रा मुझे ये थोड़ा बताओ कि augmented reality, like if you were to unpack the idea of augmented reality itself, क्या चीज़ है basically augmented reality, अच्छा, augmented and how do you see having any kind of a real impact, you know, in the industry itself? Like if you could like unpack the idea to our audience. a lot of museums are turning to AR because it's a very good way to make your art more interactive. Like एक painting है वो दीवार पे लगी हुई है. But if you combine it with AR and you're standing in front of the painting, you can actually see it sort of come to life, if I have to put it that way. Mhm. Are Into, there like, any art augmented galleries from reality. Pakistan that are I don't think so. Okay. Not as yet. okay? But there's this very interesting AR trick I can show you with this Adobe AR software. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं वो अगर अपना काम ऑगमेंटेड रियलिटी में करना चाहते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ स्किल सेट वुड दे नीड? अच्छा, animation, ओके. video editing, if you want to take your art to like another level, Right. and obviously digital art. Okay, so is there a way of like, say for example, converting your physical pieces of artwork जो आपने like paint किया है वगैरह and sort of breath a digital life in them by use of, you know, these very same tools that you've just mentioned? For example, if you have an old manuscript, there was this NFT collection I saw, and पुरानी manuscripts में जो folios नहीं होते थे, the double page ones and like the single page ones, so they animated all of that. Wow. And I think it was something very pretty. Interesting. And speaking of archiving, I think NFTs can be very, very useful उस तरह के आपकी जो documentation process है, which we're lacking in बहुत ज़्यादा, partly because documentation is a sign of a healthy society, and I think we are a resilient nation, but we're not exactly a healthy nation. So We've ये been ये jumping. क्या difference है between a resilient nation and a healthy nation? I think resilience is I know direct. we're going a little off tangent here, Yeah, but we're क्या going इसमें a little off इसमें क्या tangent, थोड़ा but difference है? okay. A healthy nation understands the value of art at its core. It appreciates art and it creates art. A resilient nation is resilience आपके अंदर तब आती है जब आप crisis में होते हो. Right. When you're in crisis, creativity does tend to take a backseat. Right. Documentary does tend to take a backseat. Could you just tell me कि आजकल क्या developments हो रही हैं NFT के scene में? And if you could also like help us simplify कि यार ये non-fungible tokens हैं क्या चीज़? अच्छा, non-fungible token. It means आपके पास एक जैसे दो tokens नहीं exist कर सकते पूरी दुनिया में. NFT is any digital asset. Okay. Which is ठीक है. अच्छा, अब जैसे स्टेट बैंक जो है वो करेंसी छापता है ना, it's paper but it's minted, तो उसको एक वैल्यू मिल जाती है. ठीक हो गया. उसी तरह आपने कोई भी डिजिटल आर्टवर्क लिया या फिजिकल आर्टवर्क लिया, उसको डिजिटाइज किया, आपने उसको मिंट कर दिया, अगर उसके ऊपर वो ब्लॉकचेन का ठप्पा लग गया तो बस वो NFT बन गया. तो क्या वो ठप्पा दिख जाता है सामने जैसे? नहीं. वो कैसे फिर दिखता है? तो मतलब वो कैसे पता लगेगा कि वो ठप्पा शुदा आपको दज्जाल की आर्टवर्क है? तीसरी आंख नजर आएगी. ये क्या मतलब हर चीज नजर नहीं आनी होती ना, कुछ चीजें बैक एंड पे भी चल रही आप चाहती होती हैं हैं. कि इस पे कोई मैं वहां ज्यादा नहीं चाहता, मतलब आप चाहती हैं कि लोग फिर इस चीज को खरीदे ही ना. अच्छा, आप बाजार जाते होंगे. ओके. आपने अगर घर का सौदा लेना है तो आप सुपरमार्केट जाएंगे, आपने कपड़े लेने हैं तो आप रेचकई के बाजार जाएंगे. उसी तरह अगर आपने NFTs खरीदने हैं तो आप NFT मार्केट प्लेस पे जाएंगे. There are certain platforms which are selling NFTs. Like for example? OpenSea है, Rarible भाई ये है, हम किसी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर Foundation रहे, है, but sponsorship नहीं है. Then there's level 2 platforms. नहीं, अगर फिर से तुम रिपीट कर दो कौन-कौन से हैं इसमें? OpenSea, Rarible, Foundation. Okay. And there's a lot of more platforms as well, but these are like the 3 most famous ones. Since you were telling us that
blockchain is a supportive technology of the NFTs. तो ज़रा ये थोड़ा बताओ कि since distributed ledgers and blockchain, they're the same thing, right? थोड़ा अनपैक कर दो या थोड़ा समझा दो कि भाई इन सिंपलर टर्म्स ब्लॉकचेन क्या है, क्योंकि लोग यहाँ पे समझ रहे होते हैं अच्छा भाई ब्लॉकचेन इज बेसिकली क्रिप्टो। तो पहले थोड़ा ये बता दो कि ब्लॉकचेन इटसेल्फ है क्या। अच्छा, blockchain is a technology which is basically, it's like an immense amount of data storage. ठीक है, पर किस तरह से, अच्छा, कैसे वो डेटा ऐसे स्टोरेज होती होता है? है। एक देखो, एक डेटा स्टोरेज तो आप क्लाउड के ऊपर भी कर रहे हो, एक डेटा स्टोरेज आप अपने हार्ड ड्राइव के ऊपर भी कर रहे हो, बट व्हाट्स It's द like, डिफरेंस, क्या फर्क है? you know, जैसे again Pokemon reference, but जैसे हम्म, Pokemon evolve करता था ना, हाँ, उस तरह कोई data storage mechanisms evolve कर गए हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रांजैक्शन की है, आपने मुझे एक बिटकॉइन तोहफा दे दिया है, ठीक है, आपको ज़्यादा मज़ा आ गया था मुझसे गुफ्तगू करके। तो वो जो आपने ट्रांजैक्शन की है ना, बिफोर इट गेट्स कंफर्म्ड, हाँ, it's going to be sent to like worldwide peer-to-peer networks जिसको कहते हैं। ठीक है। और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क्स किस तरह से बने हुए होते हैं? It's like server farms. ओके, Yes, but it's like a server farm sort of distributed all over the world. तो मतलब ये किसी एक खास जगह पे नहीं है, मतलब नहीं। मिसाल के तौर पे एक सर्वर फार्म अगर यहाँ पे है से अच्छा, सेक्टर it's not F5 में, exactly a server farm, but I'm just using it as an example. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, it's like this global virtual server farm. ठीक है। तो एक लोकेशन मिसाल के तौर पे अगर एक पॉइंट, आई एम जस्ट थ्रोइंग द टर्म क्वाइट वेरी कैजुअली, अगर एक सर्वर फार्म इधर यहाँ पे है और दूसरा से परहैप्स सैन फ्रांसिस्को में है, या कह दो कि एक कराची में है, एक बॉम्बे में है, एक बीजिंग में है, Yeah, एक so सिंगापुर में है, these computers so मतलब are they can be basically, all over the yeah, place, they're basically called nodes, ठीक है। and you can have a node from anywhere from Antarctica to the North Pole. फॉर एग्जाम्पल एक फाइल है या कोई भी इस तरह की जो चीज़ है, इट कैन बी साइमल्टेनियसली एनीवेयर इन एनी ऑफ दीज प्लेसेस, मतलब It's gonna go to all of the nodes. साइमल्टेनियसली, ठीक है। All of them are gonna carry out some calculations. हम्म, They're gonna do a lot of math. उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म होगी। तो बेसिकली कंप्यूटर ये कैलकुलेट करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन लाइक इज इट ऑथेंटिक और नॉट, ठीक हो गया। या इज इट डूएबल और नॉट। सो देन फॉर हाउ, एग्जांपल आपने मुझे एक बिटकॉइन गिफ्ट कर दिया, आपके अपने अकाउंट में ठेंगा भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर्स आपका वो रिजेक्ट कर देंगे, जैसे चेक बाउंस होता है। ओके, तो वो आपकी ट्रांजैक्शन इज नॉट गोना गो फॉरवर्ड। ठीक हो गया। एंड देन हाउ डू यू डू द सेम थिंग व्हेन इट कम्स टू द एनएफटीज? Basically, an NFT is a digital artwork or ठीक है, any artwork converted into a digital asset. ठीक हो Basically, गया, anything converted into a digital asset. अगर आप अपना दिमाग कंप्यूटर में डाउनलोड करके उसकी चिप की NFT बना दें तो वो भी सही है, it's still तो valid. लाइक फॉर एग्जांपल क्लाउड पे भी a lot of hospitals that are operating like a network of hospitals. How different would it be to have your data stored, you know, on a distributed ledger network than say versus a cloud infrastructure? The key difference between data storage on Web 2, like वो तो already अभी भी आपका data digitally internet पे ही store हो रहा है. ठीक है, but safety or security wise क्या Safety and difference होगा security उसमें? wise, third parties do not have access to data stored on blockchains. Okay, Uh, s- Third parties do have access to data stored anywhere on Web 2. okay, okay. Like, तो for इसमें example, if you upload something इधर बैठ के Google Drive के ऊपर, Google Drive के ऊपर आपने वो चीज़ डाल दी, अगर आपका जो डाटा स्टोर हुआ है, मेलिंग लिस्ट, स्पैम ईमेल, स्पैम एसएमएसेस, वो कैसे आते हैं? बिकॉज कंपनीज आर एक्चुअली परचेजिंग योर डाटा, okay, कि आपके XYZ इंटरेस्ट्स हैं। इंस्टाग्राम, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब उसके ऊपर एड्स देना शुरू कर देगा। वो आपके इंटरेस्ट गेज करके to the respective parties. For example, if I'm selling cooking oil and I hear you talking about it, I know आपका interest है cooking में, तो Instagram will just, sort of direct
कि ये फलां बंदा है जिसका इंटरेस्ट है, आपसे रेलेवेंट, तो आप अपना बिजनेस इसको एडवर्टाइज करें. No, that's true. मतलब That's like how the basic whole advertising works. I mean, metaverse and I think Google. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आई थिंक दिस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डाटा ओनरशिप. Okay. बिकॉज जो एक सॉर्ट ऑफ मिडल मैन वाला एक कॉन्सेप्ट है ना हमारी रियल लाइफ में भी एंड इवन वेब 2 में भी, वो ख़त्म हो जाता है. एवरी ब्लॉक ऑन द चेन हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज. Right. जब वो ब्लॉक भर जाता है, जैसे यू आर पुटिंग फूड इन अ बॉक्स, यू क्लोज द लिड, इट्स क्लोज्ड. Okay. It will stay stored, Okay. but it will not be accessible to any third party. Interesting. Interesting. अब मैं थोड़ा गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेके जाता हूँ. मतलब we थोड़ा अनपैक कर दिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हैं क्या. अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है. आपने मुझे बहुत सारा मोटिवेशन दे के कहा कि भाई अब इसको NFT में कन्वर्ट करें, और या यू मोटिवेटेड मी इन सच अ वे कि तुमने कहा कि यार चलो इसको NFT में कन्वर्ट करते हैं, अब इसकी कहीं फ़रोख्त करते हैं. तो व्हाट वुड आई नीड टू डू as a budding NFT artist in order to sell my or convert my artwork into NFT and then put अच्छा, it up तो for sale? conversion process तो it's pretty simple. Okay, Open a marketplace, ठीक है. open an account on it, upload it, mint it. Job done. मतलब is it that simple? Yeah, it's that simple. तो पर मतलब जो सेलिंग वाला पार्ट है वो कैसे होता है? The selling part is जो little सबसे more मुश्किल पार्ट है वो कौन सा है मतलब इसमें? selling it. Because you need Okay. to make friends before you find customers. Okay. You need to And how build do you find community friends? around your art before you sell it. So basically, if you want to sell an NFT collection successfully, उसका बहुत key role होता है community का. Okay. Like abhi recently there was this NFT collection called Itsuki. It was a collection of 6,666 profile picture style NFTs. Just profile pictures. Yeah. What It was just a girl. Okay. उनकी community इतनी strong थी that they sold out within 24 hours. Wow. And where were these artists actually from? From all over the world, I believe. I see. I don't know where their design team was from. I do know 2-3 people in their community. One of them is based in Toronto. She's a Pakistani. One of them is, I don't know where he's based, but he's in India. I still don't know who's actually behind the whole thing. तो क्या ये ज़रूरी है, मतलब is it really important that you have to have like tens or probably hundreds of No, artworks या art pieces you can in order sell a to collection like of 2. I अच्छा know a photographer, he had a collection of 3 pictures. You build a brand out of yourself as an artist. कि लोग आपका काम इसलिए लें because आपने बनाया है. ठीक है, but that would not be just so, अच्छा, so NFT I mean it would not communities be are an easier mostly, journey to yeah, you know, it's एकदम not. से. It takes several months actually. I'm saying like for a budding artist वो किस तरह से करे? Like यार if they for a budding artist ये है कि Twitter and Discord are 2 amazing platforms. अच्छा. Most of your NFT community is there. Mhm. You have like different communities. आपके group chats बने हुए हैं, Discord channels बने हुए हैं. Set up a Discord, set up a Twitter. Talk to people, attend a lot of spaces, interact with people, make virtual friends, make that bond with people. Uske baad, then take out your collection and trust me, people will support you. But how would you make sure that you don't end up getting ripped off in the process? Why? You won't get ripped off because it doesn't really cost you that much in terms like financial terms mein. You can mint on, you know, like if you mint on the Ethereum blockchain, जो उसकी fee होती है उसको mint करने की, it's relatively pretty high. You can mint on other blockchain, which Solana, Tezos, Polygon. You can even mint them for free on some of these. Okay. So you're not gonna get ripped off. had said ये होगा कि nobody's gonna buy your art. But again, वो वाला risk तो as an artist वैसे भी है आपके पास. Right. If I'm sitting at home and I'm making art, maybe people are gonna buy it, maybe people aren't gonna buy it. अच्छा, अभी फिर रेगुलेशन के बारे में अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूं कि like recently there was a report in Dawn कि Pakistanis made somewhere around over $600 million in 2021 alone as profit
in crypto itself. और हम देखते हैं कि there's hardly any regulation. So how do you go about regulating cryptos and NFTs? किस तरह की मतलब business friendly regulation policy हो सकती है? Basically, I think Web3 के इर्द गिर्द जो hype create हुई हुई है ना, and the whole mystery around it, I think इस सारे उसमें हम ये भूल जाते हैं कि Web2 के आगे Web3 कुछ भी नहीं है. Like वो कैसे? Facebook alone has a market cap bigger than all of Web3 combined. Don't you think there would be like a propensity among the giants of the Web 2.0 to stay ahead of the curve? और वो कहेंगे यार चलो यार let's make that move in that direction. Like for example, Tesla मेरे ख्याल से Elon Musk वाले, they do buy like they do accept payments in crypto when they want to. Okay, Isn't so that so? I'm going to give you a reality check here. Mm-hmm. Regardless of what new technology comes out and how accessible it is to the inaccessible, the rich are still going to get richer. हाँ exactly. मतलब That's just how the world works. Right. There's not anything you can do about it. I'm going to give you a very interesting example. El Salvador was the first country to give Bitcoin legal tender. उनकी इकोनॉमी के बहुत हालात ख़राब थे. उसके बाद जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, they not only gave Bitcoin legal tender, they've also proposed to launch their own digital currency, Sango, or Sango, however they pronounce it. Excuse me if I have that wrong. तो just to say कि आपका जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उनके प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई थी कि it's a possibility we can consider. France is thinking and working towards building its own digital currency. China is working towards it. The Central European Bank has already announced that they're नहीं चाइना ने तो अपनी डिजिटल करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर दी है. कर दी है. हाँ डिजिटल करेंसी तो लॉन्च कर दी बट आई डोंट नो कि आर दे थिंकिंग टू वेंचर इनटू क्रिप्टो लाइक बट डिजिटल करेंसी तो उन्होंने The thing ऑलरेडी is, लॉन्च कर दी. China is already. But in terms of valuation, it's the it's same like- as it's the existing, China hard already is a currency. cashless society. तो I don't That's think true. उन्हें कोई इतना ज़्यादा मसला होगा. By digital currency here, I mean cryptocurrency. The Central European Bank has also announced that they're launching a digital euro. So the thing is कि अब ये चीज़ आ तो रही है. By the way, Sri Lanka, given everything we've heard about their economic crisis, a crypto giant has reached out to them and said कि maybe we can help you with this crisis. I'm going to tell you how it's going to work. जैसे आपको याद है जब एक ज़माने में जिम्बाब्वे की इकॉनमी क्रैश कर गई थी, the country went bankrupt, तो जिम्बाब्वे की करेंसी छोड़ के लोगों ने डॉलर्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे उधर. तो I mean, it sounds very dystopian, but let's say there's a country with a crashing economy. So what they can do is replace currency with cryptocurrency, which isn't exactly going to be a very good idea if you just go into it without thinking. But it's maybe 2 decades, 3 decades down the line, we see something like this happen. Right. So but don't you think it's really important that instead of making that transition to say crypto, it's rather better कि safe side पे पहले digital currency की तरफ आप adopt करना शुरू कर दें. Yeah, do you think there's अच्छा. probably a space to experiment in both areas? Let's talk about Pakistan. Like मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक digital PKR भी है, and then on the other hand you also come up with something in terms of crypto also. Let's talk about this in Pakistani terms. In Pakistan, even a digital PKR at this point is not possible क्योंकि आपकी cash based economy है. आप digital currency के ऊपर तब जा सकते हो जब आप when you're a relatively cash free society. Like if a country from the Nordics or from Western Europe decides to do this, yes with it. लेकिन आपका तो पूरी इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी if you take out cash from it. So you need to evolve, but you need to evolve relatively very quickly as a society and as a culture क्योंकि ये चीज़ बाकी दुनिया में तो आ रही है. अगर कल को क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हो जाती हैं, डिजिटल
यूरो भी आ जाता है, डॉलर भी आ जाता है, रूबल भी आ जाता है, युआन भी आ जाता है, तो आपको कौन पूछेगा? फिर हमारा यही रोना होगा जो हमारा अभी अपनी फिएट करेंसी के साथ है। या बट मेरे ख्याल से वो थोड़ी डिस्टिंक्शन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट डिजिटल डॉलर। तो क्या डिजिटल डॉलर मीन्स लाइक क्रिप्टो डॉलर या फिर द डिजिटल? Okay, I think you're confusing these two terms a little here. हम्म There are cryptocurrencies which are pegged to the dollar. हम्म Pegged का मतलब होता है उसका fixed exchange rate है. हम्म Then there are crypto versions of that currency. ओके Like for example, जो Europe है, it's releasing a crypto euro. राइट The crypto euro is gonna be worth 1.5 fiat euros. So I think it's just the common colloquial interchange of terms, which is causing a little bit of confusion. But हाँ, हाँ नहीं, क्योंकि द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस बिकॉज़ द जब ये चाइना का जब इन्होंने लॉन्च की थी अपनी डिजिटल करेंसी व्हिच इज़ इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आई मीन it's the same in terms of value as their hard cash, right? So उसमें फिर यही था कि मतलब people had this curiosity कि यार क्या इसकी value would be completely different to say their already existing currency. तो उसमें दे said it कि नहीं, वही होगी जो ऑलरेडी हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी की है। it's just notes in digital form. एग्जैक्टली यही सारी चीज़ थी। सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि भाई अगर कल को डिजिटल डॉलर आता है, इज इट द सेम थिंग एज व्हाट द चाइनीज डिड? वो depend करता है if they're launching a digital currency or if they're launching a cryptocurrency. एग्जैक्टली, सो मैं चाह रहा था कि उस थोड़ा बाइनरी को ना थोड़ा डिफरेंशिएट हम कर लें ताकि एटलीस्ट people and for us also, like अच्छा, there's this जब आप एक distinction in cryptocurrency place already. बनाओगे हाँ तो naturally no economy can entirely rely on crypto because crypto is very volatile. ओके Having a digital currency just means कि आपके जो notes paper की form में exist कर रहे हैं वो they also exist in like your एग्जैक्टली phone or something, एग्जैक्टली which I think is not that big of a change because हम cards भी तो हर जगह use करते हैं। जैसे आपका कार्ड स्वाइप होता है तो टेक्निकली स्पीकिंग दैट low key is digital एग्जैक्टली currency. एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आई डोंट थिंक दैट इज़ मच ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हमारा इशू ये है कि हमें डिजिटल करेंसी की तरफ भी जाते हुए मसला होगा क्योंकि लाइक जैसे आपके दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो इधर भी होते हैं, वो इंग्लैंड में भी होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में अगर मैंने आपके साथ काम किया, आपने मुझे दिहाड़ी देनी है, आप मेरे अकाउंट में भेजेंगे, लाइक आप मुझे कैश नहीं पकड़ाएंगे। बिल्कुल सही है, बट hypothetically speaking, like if you were to go down and adopt, say for example, digital crypto भी कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी भी कर रहे हैं, so आपने आपकी जिस भी हुकूमत ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की ना, सबसे पहले तो उसको फारिग किया जाएगा क्योंकि हमारे लोगों का एक फेवरेट साइड हॉबी टैक्स चोरी करना है। ठीक तो है, जब करेंसी डिजिटल हो जाएगी ऑब्वियसली वो ट्रेसेबल हो जाएगी। exactly, and ट्रेसेबल and होगी then the तो आप very टैक्स reason चोरी why नहीं they कर actually did सकेंगे। this in China, वो यही purpose है कि हाँ, वो तो basically transactions को डिजिटल हो गया सारा कुछ तो फिर आप टैक्स चोरी नहीं कर सकेंगे। But again, I think even Dr. Raza Bakir was also considering this idea of launching the digital currency, and मुझे लगता है CNN पे भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था। पर अगर डिजिटल क्रिप्टो की बात की जाए तो डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ government ever considering, or I the state bank don't ever know considering? if it's a possibility. Mm-hmm. But if I ever got a chance, I would definitely pitch them a few ideas because I think अगर हम एक crypto launch कर देते हैं Mm-hmm. and to counter the devaluation of the rupee, we peg it for like 100 rupees Mm-hmm. for one coin and हम अपनी local market में उसको incentivize करना शुरू कर दें तो I think we can do wonders. Right. You often hear this thing कि भाई uh, Web 3.0 offers you a lot of these promises कि in comparison to Web 2.0, it's relatively far secure, आपकी intellectual property wise भी काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी चीज़ों में भी मतलब उसको बड़ी एक हाइप मिली हुई है। क्या तुम्हें लगता है कि इसी तरीके से है या ये बहुत ही मतलब एक इट्स अ वेरी फार फेच्ड नोशन कि
अच्छा कि बहुत ही लंबी सी छोड़ी हुई है इन्होंने कि बस आपने वेब आई 3.0 थिंक अडॉप्ट कर लंबी लिया। नहीं छोड़ी हुई, ओके। but when we talk about something being promising, हम्म। it means the potential promises. It doesn't automatically translate to कि XYZ has to deliver this to सो you. व्हाट यू आर सेइंग इज कि मतलब वेब 3.0 के अंदर भी मतलब साइबर सिक्योरिटी वाइज ब्रीचेस भी हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो Um, सकती हैं? cyber security breaches तो नहीं हो सकते, but yes, cyber crime may see an increase लाइक हाउ? because किस तरह से हो सकता है? okay, so let's say you have an NFT collection which is going absolutely great. ठीक है। पूरी दुनिया में वो फैल गई है, वो OpenSea के नंबर 1 ट्रेडेड पे आ गई है in terms of trade volume. Either people actually purchase a counterfeit, or I just randomly send it to someone and somebody accidentally interacts with the counterfeit in their wallet. होगा क्या कि आपके वॉलेट के अंदर जो पैसे होंगे वो ड्रेन हो जाएंगे. वाओ! So basically, you can go bankrupt over one mistake. तो ये वाली विजिलेंस आपने मेंटेन तो करनी वो है. विजिलेंस फिर कैसे बंदा मेंटेन करे? मतलब मेरी जो ज़िंदगी की शायद जमा जमा पूँजी हो, मतलब अब तक की जो जमा पूँजी हो, वो तो मतलब एक ही लम्हे में मतलब सारी उड़ जाएगी। तो उससे हाउ डू यू लाइक मेक श्योर कि वो ना हो? As a like in this specific हुँ। example, आई वुड से अकल का इस्तेमाल करें. बट मतलब हाउ? लाइक वो अकल का इस्तेमाल करने के लिए भी आपको कुछ ये चीज़ें तो इन गलतफहमी प्लेस। क्यों है कि किसी को आप पे इतना प्यार है कि कोई आपको कोई टॉप क्लास एनएफटी मुफ्त में गिफ्ट कर देगा? इफ इट्स इन योर वॉलेट, हुँ। डोंट टच इट. यू सेड यू कुड हैव 2 डिफरेंट वॉलेट्स या किस तरह की वो या चीज़ थी? have one wallet which you've connected to like various websites, ओके। and use that wallet to enter giveaways and everything, because obviously वो publicly post होगा जैसे email post होता है, wallet address भी post कर दिया. Have another wallet you keep for cold storage. ओके। You can use any wallet for cold storage, just don't tell anybody that wallet exists. Or what you can do is there are specific wallets for cold storage jinki security is like amped up a level. Some of them are like offline wallets. हुँ, हुँ। तो जिस तरह you know how the same way you protect your computers from लाइक being hacked. आर देयर एनी नेम्स, एनी रैंडम नेम्स दैट कम टू योर माइंड कि मतलब Trust is a very good wallet. ओके, Then Binance MetaMask wallet सबके पास हैं. राइट, You can have a Phantom wallet, you can have a Coinbase wallet. राइट। There, बट it's a अगेन very long आई list. डोंट थिंक कि मतलब वी आर नॉट एंडोर्सिंग एनी ऑफ दीज़ नहीं, वॉलेट्स आउट not देयर। no paid sponsorships. राइट, 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 राइट। अच्छा, अब थोड़ा Not मैं like हमसे कोई पेड स्पॉन्सरशिप लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन चले खैर. अच्छा, मुझे ये बताओ, हाउ डू यू एक्चुअली हेल्प बिल्ड ट्रस्ट इन एन ऑलरेडी ग्रोइंग वोलेटाइल मार्केट? मतलब अब लाइक नॉट सो लॉन्ग अगो वी सॉ अ लॉट ऑफ, क्या कहते हैं, वोलेटाइल पीरियड आया था इवन व्हेन इट केम टू क्रिप्टो। अभी सो आजकल भी हाँ, it's called the crypto winter. हाँ, इंटरेस्टिंग। Uh, So it's not just क्या कहते हैं, the startup sector, it's also it's also the, क्या कहते हैं, क्रिप्टो भी जो है I think it's gonna be the whole world by वर्ल्ड। next year. हम्म। Because जो आपका एक बेसिक रिसेशन का साइकिल होता है, हम्म। वो पूरा हो गया तो सो वो यू तो सी we can लाइक अ see it नॉक coming. ऑफ, एक नॉक ऑफ इफेक्ट है, और मतलब वो हर जगह हर चीज में दिखने में आएगा। I think crypto winter क्योंकि पहले आ गया है, there is a chance we might be out of the crypto winter, हम्म। and there is also a chance कि जब बाकी सारी दुनिया में recession आएगा, तो people increasingly turn to crypto, and that sort of gives this market a boost. एंड I'm not the expert on the financial wo, so I can't really comment on it, but you know, बट दैट्स योर हंच। it's just a possibility कि ये हो सकता है. राइट, राइट, राइट। सो यू सी अ लॉट ऑफ पीपल पार्किंग देयर एसेट, या Either increased or people will converting turn their to asset crypto, into yeah, crypto, either हाँ। that will happen and crypto की market को boost मिल जाएगा, वरना crypto winter and your other economic recession will just go on side by side. I know we're like in middle of a difficult patch, if I may say, which can last, say, until the next year. But तुम्हें कोई लग रहा है कि कोई इकोनॉमिक पॉसिबिलिटीज भी हैं ऑफ वेब 3.2, और अगर हैं तो वो क्या हो सकती हैं? एंड देन द प्रॉब्लम इज दिस, आई सी अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन इन पाकिस्तान के, यार ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, but then I never see that realization converting into something tangible, या we don't tend to have that kind of an attitude कि अच्छा यार अब इसको एक अच्छी promising चीज में convert करना भी है।
अच्छा आई थिंक माशाल्लाह हम काफ़ी ज़हीन कौम है, हमारा दिमाग बहुत चलता है, लेकिन मसला ये है कि वो चलता सिर्फ़ जुगाड़ लगाने के ऊपर है। हुँ। और अगर गलती से कोई बंदा ज़्यादा अच्छी बात कर दे, तो पहले तो घर वाले उसको यूँ करके देखते हैं कि तुम्हारे मुँह से कोई पढ़ी-लिखी बात कैसे निकल आई? उसके बाद बाकी सारे लोग कहते हैं मतलब ठीक हो, मतलब चले हो गए हो। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। देयर हुँ, इज़ ऑल ऑफ दैट। आई थिंक कि इन पाकिस्तान देयर आर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़. You can revolutionize your whole cottage industry if you sort of incorporate Web3 into your mainstream. हुँ, You can do that, but कौन करेगा? राइट, There are private investors, but private investors are not gonna invest in a country जिसकी zero economic policy है. राइट। Your economic policy literally changes anytime, any day. सो लाइक इफ पीपल वांट टू सॉर्ट ऑफ लाइक अपनी थोड़ी समझ-बूझ वेब 3.0 के बारे में अच्छे तरीके से बनाना चाहते हैं, तो वो हाउ कुड यू बी लाइक अ सोर्स ऑफ लर्निंग टू देम? किस तरह से उसको थोड़ा हेल्प आउट अच्छा, कर so सकते हो? I'm working with Manifest Studios. हुँ, हुँ, मैं उनकी community manager हूँ. We're also going to be coming out with a very amazing NFT collection later. But for now, we've started this awareness portal, हुँ, हुँ, and we're all about accessibility, making Web3 accessible to everyone. So you can, go visit their website, visit the portal, learn more about it. And also NFT community, when you enter and when you start हुँ, talking हुँ, to people, लोग बहुत helpful हैं. ओके। They're very open, they're very welcoming. उस तरह barrier to entry नहीं है कि you feel out of place or you feel alone. नहीं, बट मैं वापस थोड़ा क्वेश्चन पे आऊँगा। मैंने कहा कि अगर लोग वेब 3.0 के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी बेहतर बनाना चाहते हैं, आर यू कमिंग अप विद समथिंग दैट We've already launched a website. ओके, Manifest Studios ने already launch कर दी है. It's basically an awareness portal जिस पे how to guides हैं, basic explainers ओह हैं, वंडरफुल, there are articles explaining different buzzwords and all of that. सही। अच्छा, अब मुझे थोड़ा ये बता दो कि यार हमने तो सारी पॉसिबिलिटीज़ की भी बात की है, सब चीज़ों की बात की है। लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। तुम्हें लगता है कि कोई इसमें कॉन्स भी हैं वेब 3.0 के? I think the first one is कि Web3 is a little technical. ओके, Even जब मैंने Web3 में जाना था, I had to research it a little bit. And राइट। you sort of have to find your footing slowly. हुँ, हुँ, दूसरी बात ये कि आई थिंक Web3 जब अगर मेन स्ट्रीम में आ जाता है, तो जो आपकी रीड ओनली वेबसाइट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो जाएँगी. ओके, एंड इवन Web2 वेबसाइट्स आर गोना नीड टू लाइक सॉर्ट ऑफ अपग्रेड देमसेल्व्स. जैसे okay, software update just makes me laugh at this point because it's become a meme. ओह But गॉड! referring to software update in आपको ज very आपको आपको technical ज़रूरत तो नहीं है ना? terms, मुझे तो नहीं है ज़रूरत मतलब। uh, ये तो ये तो मतलब मेरा मुझे सिस्टम नया है। we don't get to decide that अच्छा, कि ठीक है। ज़रूरत है या नहीं. अच्छा, लेकिन क्या पता किसी के ख्याल में हो, बस आगे अल्लाह खुदा बचाए. ना करे। अच्छा, आप वापस आ जाएँ अपने जवाब अच्छा पे। चलिए खैर. Speaking of the software update in हाँ। very technical terms, हुँ, हुँ। um, जैसे आपने अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट करना होता है हुँ, या हुँ। आपने अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस अपडेट करना होता है रेगुलरली, तो existing websites will need an upgrade to sort of come to terms with Web3. And because it uses sort of a very not a very but it uses a heavier technology, तो जो आपके it's not going to be accessible on all the gadgets. Digital divide की term है, we've started throwing it around a little more casually, हुँ, and I've हुँ। also noticed it's not just Pakistan, it's a general gap between the global north and the global नहीं, ये south. पूरी दुनिया में है, आई कंप्लीटली एग्री Like विद यू, बट लेट मी जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक ऐड क्लैरिटी टू yeah, इट। लाइक there's one person who could say perhaps, you know, afford a very expensive gadget. And on the other hand, you have another person who perhaps cannot, वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब उसके पास शायद 20,000 की या 30,000 की एक चीज़ होगी। उस बंदे के पास एक आर्टिस्टिक स्किल भी अच्छा है, बट अगेन इन ऑर्डर टू बिल्ड अपॉन हिज और हर स्किल्स, या उसने अगर अपना आर्ट प्रोडक्ट रिफाइन भी करना है, तो ज़ाहिर है ही और शी एक्चुअली नीड्स दैट प्लेटफॉर्म, राइट? सो
जब उसके पास पैसे ही नहीं है ना, बैंक से वो जाके लोन ले सकता है, तो फिर वो इन अ वे एक डिवाइड तो कंपाउंड होती जाएगी ना। अच्छा हालांकि आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि ग्लोबल फिनोमेना नहीं है मतलब अच्छा डेफिनेटली। अच्छा, एक तो इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जैसे यू सी पाकिस्तान एंड देन यूट्यूब फिनलैंड्स विजन 2030, तो आपको ना दिन में तारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, 14 तबक रोशन हो जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, हम क्यों हैं। तो तो यहाँ इतना यहाँ पे कोई कुछ नहीं करना चाहता, मतलब बस कहते हैं yeah, लेट that के too. सारा काम हो जाए बस। We want to be like transported to that Yeah, world. We don't want to work towards yeah, it. yeah. वेब 2 के टर्म्स में अगर देखें तो आई थिंक इट वुड बॉयल डाउन टू आपकी कितने मेगापिक्सल कैमरा से इंस्टाग्राम पे तस्वीर डली हुई है और मेरे की कितने डली हुई है। आपने सैमसंग रखा हुआ है, मैंने आईफोन रखा हुआ है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर मैंने या किसी और ने आईफोन रखा हुआ है तो we're paying for the brand name. We're not paying for the processor because the processor is like almost nearly the same and it can sustain the same form of technology. If you come to computers, ek to there's a lot of ingenious ways we have come up with, because we're a relatively poor country who cannot always afford new tech. We can't afford an entire new device, तो हम उसके bits and pieces upgrade कर देते हैं. We make computers ourselves. एक तो there's that option जो लोग खुद से करना शुरू हो जाएंगे, and then there's also the fact कि a model, like a business model, but in a sort of a public-private partnership. Because if it's entirely public, it's not going to work. If it's entirely private, it might get a little too expensive and it might exploit people, which we don't want. So you certainly do not want them to be exclusive कि यार सिर्फ सोसाइटी का एक certain segment ही Yeah. use करे उन्हें, तो ठीक है। you know, जैसे internet cafes हुआ करते थे, हम्म। so we sort of have those you know, places where people Like you who can are have those interested spaces like in, जैसे co-working yeah, like spaces type की जगहें होती हैं, exactly. yeah. So like there's an office, let's say, or there's this net of computers which is placed somewhere, and if there are NFT artists जिनकी अपनी devices इतनी high quality की नहीं है, Right. yeah, they don't have access to a scanner at home or anything, so they can, you know, just go and pay a very nominal fee and get things done. Right, right. And you think that's one way of making sure that there's also accessibility, Yeah. but then you're also helping drive productivity, and then at the same time making sure that your products are also globally competitive. Yeah, and you're also creating more jobs, Interesting. and you're also, you know, sort of incentivizing coming in. But would it require a lot of investment before we wrap this up? मतलब तुम्हें लगता है कि क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है? यार आई थिंक अगर किसी ने एक दुकान किराए पे लेके उसके अंदर 6 कंप्यूटर और 4 स्कैनर रखने हैं, तो ये इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं। राइट। और वो भी जब उसके ऊपर उन्हें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिल जाए क्योंकि पार्टनरशिप है, तो नथिंग लाइक। क्या पैगाम देना चाहोगे? अच्छा, सो ऑल इन ऑल मतलब बड़ा टिपिकल सेंस में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कौम के नाम? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कौम को कि जब भी कोई नई चीज़ आती है, तो उसके साथ मसले हमेशा होते हैं। ठीक है। इंस्टेड ऑफ जो हमारी आदत है कि हमने पहले लाउंज में बैठ के खाला के पास रोना होता है, फिर फूफो के कमरे में जाके रोना डालना होता है उसी बात पे। Don't sound like a person who might end up saying कि यार ये तो misogynist किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, उसके बाद आपने जाके not being sexist either. वालिद साहब के मिन्नत तरले करने होते हैं Right. कि ये हो गया है, वो हो गया है, तो प्लीज ऐसे कर दें, वैसे नहीं हो रहा। ठीक। तो इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग that approach, we need to look for we need to look inside ourselves for a very solution oriented approach कि ये चीज है, ये इसका मसला है, अब मसले का हल निकालना है। जब हम मसले का हल जुगाड़ से निकाल सकते हैं, तो हम उसको कोई प्रोडक्टिव हल भी तो निकल सकते हैं चीजों का। ठीक हो गया। So I think that's all. Thank you so much, Komal, for being part of today's discussion. Thank you for having me. It was excellent. I thoroughly enjoyed it. I really learned a lot from this conversation today, and I'm glad to and I hear really that. hope our viewers have also benefited from this conversation. So I thank you hope so the much. same. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Pleasure is all ours. Thank you.
पाक यूएस टीवी, हमारा नहीं आप सबका टीवी।